Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करूची जदि भल लागिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे हमें स्केलर प्रोडक्ट आउ वेक्टर प्रोडक्ट विषय रे पढिबा सो दुईटा वेक्टर को आमे दुईटा वे रे प्रोडक्ट करि परिबा गोटे हला स्केलर प्रोडक्ट जहा को कहा जाए डॉट प्रोडक्ट आ गोटे हला वेक्टर प्रोडक्ट जहा को क्रॉस प्रोडक्ट मध्य कहा जाए सो प्रथमे देखिबा स्केलर प्रोडक्ट लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स a एंड b ताले स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखि परिबा a डॉट b ओके हेंस this is called as a dot b and dot product of two vectors so यार definition कोन scalar product of two vectors is defined as the product of the magnitude of the two vectors and the cosine of the smaller angle between them okay remember smaller angle ये कहूची that means इठी देखो as per the definition a dot b रो value हे गला ab cos theta so suppose इयाडे तमरो वेक्टर a गला इयाडे वेक्टर b गला so this one is the smaller angle bigger angle टा एटा ओके हमें bigger angle को consideration को नेबा नाही ओके so এটা আসলা তোমার স্কেলার প্রোডাক্ট what are the characteristics it is commutative okay a dot b equal to b dot a because a dot b hela ab cos theta b dot a hela ba cos of minus theta so which is equal to ab cos theta okay we know that cos of minus theta equal to cos theta তারপরে সেকেন্ড কହୁଛି যে it is perpendicular vectors যদি আমি নউଛୁ তাহলে সেই কেসরে থিটার ভ্যালু 90 ডিগ্রি so the scalar product of two perpendicular vectors will be equal to 0 because cos 90 is 0 okay अच्छा next हला scalar product of a vector with itself जदि हमें निजे गोटे वेक्टर सहित स्केलर प्रोडक्ट करबा ताले a dot a हिजबो which is a dot a cos 0 or a square right अच्छा म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जोटा कि तमरो along the cartesian coordinate system x y z axis अछि so I dot j will be equal to j dot k equal to k dot I एमान को भितर एंगल केते हला 90 डिग्री सो इट्स वैल्यू इज 0 किंतु समान यूनिट वेक्टर जदि नै जाउछु ताले I dot I ओके एटा एटी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि दिस शुड बी j dot j ओके देन k dot k all these will be equal to 1 ओके तापरे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर्स कोलिनियर हमें जानि छु दुटा वे रही पारे गोटे हला पैरेलल गोटे हला एंटी पैरेलल पैरेलल हेले थीटा हिजिबो 0 डिग्री सो इट्स वैल्यू विल बी ab एंटी पैरेलल केस रे थीटा 180 डिग्री सो माइनस ab राइट ज्योमेट्रिकल मीनिंग कोन स्केलर प्रोडक्ट रे देखिबा दुईटा वेक्टर जदि हमें प्रोडक्ट नउछु प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अदर इन इट्स डायरेक्शन एटा होची स्केलर प्रोडक्ट रो ज्योमेट्रिकल मीनिंग सो सपोज हमें गोटे ट्रायंगल नेला OQM राइट जो थे कि एठी OMQ हला 90 डिग्री ओके इयाडे जाउची तमरो वेक्टर a एपटे जाउची वेक्टर b राइट सो cos थीटा हेगला OM by OQ और OQ cos theta equal to OM now OM will be equal to b cos theta which is nothing but the projection or component of b ए b रो projection पडिला राइट कहा ऊपर पडिला component of b along a okay अच्छा ताले a dot b हेगला केते ab cos theta right so a into what is this the projection or the component of b along a similarly जदि b dot a करथांता ताले b into projection of or component of a along b हेई थांता right next point रे scalar product जदि हमें नउछु with a vector product of scalar product with a vector माने स्केलर प्रोडक्ट सबले तार रिजल्ट गोटे नंबर देबो एटा मने रखि था सो इट कैन ऑकर एज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर दैट मींस a dot b
within bracket बाहर रखीदेला आम c. Okay, so it is a vector of magnitude a dot b into c in the direction of c, right? Because a dot b रो किसी भी direction आसीबो नहीं, यार value केवल गोटे number आसीबो. Okay, then scalar product of two vectors is distributive. Distribution a dot b plus c will be equal to a dot b plus a dot c. Okay, and b plus c is the resultant of b and c. तापरे scalar product a आउ b plus c, suppose ako ame prove କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, suppose यार value ହେଲା d, then it is given by a dot b plus c equal to a dot d, which is equal to a dot projection of d along a. So एठी देखो वेक्टर b ए पटे आछी, वेक्टर c ए पटे आछी, so b आउ c रो रिजल्टेंट ए पटे आसिला, जहा को कि हमें नै गला कोन ना d, यार प्रोजेक्शन टा एम्ति पडुची, राइट? ताले a dot b plus c will be equal to a into on. ओके, प्रोजेक्शन टा जोटा लाइक on टा along a रहउची. ओके, सो एबे जदि हमें देखिबा आकु, ताले आमे नेचु d equal to b plus c which is along a, जोटा प्रोजेक्शन तार, ताले a dot b plus c equal to a into om plus mn, याको आमे भांगी देला. ओके, that means a into om a into mn. एठी om होची projection of b along a, mn होची projection of c along a, as you can see in the figure om आउ mn. ओके, एठी देखो एटा आछी b रो प्रोजेक्शन आउ on एटा आछी c रो प्रोजेक्शन. ओके, mn होची c रो प्रोजेक्शन, ताले a into om हे जिवो केते a dot b and a into mn हे गला a dot c. so ए दुइटा को आमे जदि यूज करिबा हमरो फर्स्ट इक्वेशन रे, ताले we can easily prove the vector product, or sorry, the scalar product to be distributive, right? तापरे in terms of components जदि बाहर करिबा, आमे वेक्टर a को नै गला axi ayj azk, b हे गला bxi byj bzk, ताले a dot b हे जिवो ax bx plus ay by plus az bz. रिमेंबर केमती एटा पाइला, आमे यूज करला यूनिट वेक्टर रो जो रूल, समान यूनिट वेक्टर रो डॉट प्रोडक्ट तुमको तार वैल्यू 1 दबो, असमान यूनिट वेक्टर रो बा अनइक्वल यूनिट वेक्टर रो डॉट प्रोडक्ट तुमको 0 दबो, राइट? देन नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. जदि a डॉट b हे गला, आमे जानिछु a b cos थीटा, ताले cos थीटा आमे बाहर करि परबा a डॉट b by a into b, which is ax bx plus ay by plus az bz divided by एठी तमरो मैग्नीट्यूड आछी a रो, एठी मैग्नीट्यूड आछी b रो. That means theta equal to cos inverse of this much, right? So ये गला scalar product बा dot product. Next आछी vector or cross product. यारो definition कोन? दुईटा vector जदि आमे नउछु a और b, then its vector product or cross product is defined as a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors and the sign of the smaller angle between them. मैथमेटिकली आमे याको एक्सप्रेस करि परिबा a cross b equal to a b sin theta. तापरे गुटे आछी यूनिट वेक्टर which is n cap. कोन एटा? It is a unit vector which is perpendicular to the plane containing a and b. a और b जो प्लेन रे थिबो सेही प्लेन को परपेंडिकुलर, मने करो तमरो एज पर द फिगर एठी यू कैन सी वेक्टर a ए पटे आसिला, वेक्टर b ए पटे आसिला, ताले एई n कैप ता को डायरेक्शन रे हबो? परपेंडिकुलर जदि कहूची माने एई प्लेन ऑफ द पेपर रे a और b जदि रहिला, n कैप ता या तो तम आड़ को रहिबो परपेंडिकुलर, या फिर towards the plane रहिबो. Okay, away from the plane or towards the plane. So the direction of n cap is obtained by using a particular rule known as the right hand rule. right hand rule कहूची जे तमरो जदि right hand screw को हमें रोटेट करिबा in the direction from a to b, a ru b आड़ को हमें रोटेट करिबा, right? ताले the direction in which the tip of the screw advances, tip टा जो हिसाब रे आकु आकु बढ़िबो will be given by the direction of a cross b or the n cap. Okay, otherwise आ गुटे बहुत बढ़िया सहज नियम होची तमरो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स. ओके, माने एठी तमे राइट हैंड रो फिंगर्स को कर्ल करिवो केमती देखो, सपोज एठी आसीगला तमरो वेक्टर a, एठी आसीगला वेक्टर b, ताले तमे तमरो चारि फिंगर को along a रखिबो
आउ टुवर्ड्स बी को कॉल करिवो ताले थंब जो आड़े पॉइंट करिवो ओके थंबटा जदि एई भाबरे तुम कॉल करछो थंबटा देखो तुम आड़ को पॉइंट करछि जदि एमती न होई कि एठी ए थांता आ एठी बी थांता ताले ए रु बी को कॉल कला बेलकू थंबटा अवे रहिबो ओके सो एई हिसाब रे हमें डायरेक्शन पाई परिबा यूनिट वेक्टर रो व्हिच विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ a cross b right now let us see what are the characteristics of vector product it is not commutative माने a cross b is not equal to b cross a rather it is equal to minus of b cross a काई के एमती हला बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो जाउछि ओके सो डायरेक्शन चेंज हो गला तेणु करी एटा कम्यूटेटिव हे पारिला नाही तापरे निजे गोटे वेक्टर सहित आमे जदी वेक्टर प्रोडक्ट करूछु ताले इट्स वैल्यू विल बी अ नल वेक्टर रिमेंबर नल वेक्टर ए भलिया 0 तापरे एरो मार्क ओके नल वेक्टर आसीबो काई कि sin 0 रो वैल्यू 0 तापरे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स जदी नौच ताले थीटा रो वैल्यू पाई बाय 2 हबो sin पाई बाय 2 इज 1 सो a b into n cap ओके देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर जदी पैरेलल रहउची ताले थीटा हला 0 नल वेक्टर दबो एंटी पैरेलल हेले थीटा हला 180 डिग्री सो sin 180 डिग्री b तुमको 0 दबो हेंस अगेन यू विल गेट अ नल वेक्टर तापरे यूनिट वेक्टर जदी हमें वेक्टर प्रोडक्ट नउछु दिस इज वेरी इंपोर्टेंट समान यूनिट वेक्टर पाई तुम नल वेक्टर पाइबो किंतु असमान केस रे दुईटा केस आसी पारे तुमको गोटे साइकिल मन रखिया को पड़िबो आई आई पर जे पर के ए भलिया साइकिल जदी मेंटेन होउची ताले प्लस रहिबो माने आई क्रॉस जे जदी हला ताले के कैप किंतु जदी जे क्रॉस आई हला माने जे रु आई उल्टा गला जदी साइकिल ताले माइनस के हबो सिमिलरली जे क्रॉस के ठीक साइकिल रे जाइछि सो प्लस आई किंतु के क्रॉस जे विल गिव यू माइनस आई एंड लास्टली के क्रॉस आई will give you plus j but I cross k will give you minus j এটা তুমি প্লস 2 রে भी পড়িছো তারপরে यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स এটা কেমতি পাইবা দেখো আমি a क्रॉस b इक्वल टू ab sin थीटा n कैप पाइछु তাহলে n कैप रो वैल्यू हमें पाई परिबा a क्रॉस b डिवाइडेड बाय ab sin थीटा and this ab sin theta is nothing but the magnitude of a cross b right acha then the vector product in terms of rectangular components ओके सपोज रेक्टांगुलर कंपोनेंट्स हिसाब रे हमें दुई वेक्टर को लिखिदेला तार क्रॉस प्रोडक्ट करला ओके एठी हमें यूज करि परिबा जो यूनिट वेक्टर रो क्रॉस प्रोडक्ट रो नियम ताकू डेराइव करिबा ओके डेराइव करला परे विल डेफिनेटली गेट because cross product will definitely give you a vector so something into I cap something into j cap and something into k cap now you can write this in terms of a 3 cross 3 determinant where the first row is I j k second row is ax ay az and the third row is bx by bz okay then coming to the geometrical meaning of the vector product यदि a और b represent करूची adjacent sides of a parallelogram as you can see in the figure a pote b okay and inclined to each other at some angle suppose theta this is your angle then a cross b its magnitude will give you the area of this parallelogram a parallelogram ro area de debo a cross b ro magnitude now in this figure qt eta asila kono it is the height of the parallelogram so एटी हमरो OQT हे गला गोटे राइट एंगल ट्रायंगल वेयर sin थीटा इक्वल टू QT बाय OQ और QT इक्वल टू OQ sin थीटा और B sin थीटा ओके बिकॉज OQ रो वैल्यू हमें B नेचु ताले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें जानिचो इट इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट सो OP इनटू QT सो AB sin थीटा व्हिच इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हेंस प्रूव्ड राइट तापरे जदि A और B रिप्रेजेंट करूची adjacent sides of a triangle inclined to each other ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି एंगल ଆସିଲା थीटा ताले half of a cross b represents the area of the triangle एठी भी सिमिलरली qt हमें गोटे हाइट बने दबा सिमिलरली sin थीटा पाई गला देन qt इक्वल टू oq sin थीटा जोटा कि ऊपर हमें करथिला सेम जिंसो खाली हाफ गोटे एडिशनल फैक्टर आछि ओके तमे जानिछो पैरेललोग्राम इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू टू ट्रायंगल्स सो सेथि पैरेललोग्राम रे एरिया टा बेस इनटू हाइट होची किंतु ट्रायंगल केस रे हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट हुए सो एठी OQ जेतु B सो QT रो वैल्यू आसी गला B sin थीटा हेंस एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट
so यार value आसीबो finally half of OP into QT or half of AB sin theta or half of magnitude of its cross product of the two vectors. Okay, then coming to the next point, vector product of two vectors is distributive. এটা distributive हुए. Okay, माने vector product যদি দেখুଛୁ A cross B plus C will be equal to A plus B A cross B plus A cross C. Okay, याको आमे जदि प्रूव करिबा कंपोनेंट्स हिसाब रे तीनी वेक्टर को लिखि देला B plus C बाहर कला समथिंग इनटू J माने BX plus CX into I, then something into J BY plus CY into J BZ plus CZ into K. Okay, तापरे याको पुट करिबा वैल्यू. Okay, and after some simple calculations, okay, you will get the final result which is found out to be distributive. Okay, किछटा एग्जांपल एबे देखिबा ए product of two vectors in physics. प्रथम एग्जांपल टा हला work done as a scalar product. You know that जदि गोटे फोर्स आमे नै जाउछु F आउ एटा एक्ट करूची गोटे बॉडी ऊपर सच दैट से बॉडी को ये डिस्प्लेस करूची विथ डिस्प्लेसमेंट S आउ थीटा हेगला फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट भितरे एंगल. देन work is defined as the product of the component of the force along the direction of displacement and magnitude of displacement. So तमरो डिस्प्लेसमेंट ए पटे आसला फोर्स ए पटे आसला ताले work done W equal to finally F dot S or Fs cos theta आसीबो. ओके, यदि मल्टीपल वेरियस फोर्सेस तमे नेबो F1 to Fn ताले एटी किछि नै समेशन आसीबो F equal to F W equal to Fi dot R हिजबो. Okay, where R can be taken outside, right? And you know that dot product is interchangeable, so this summation Fi will give you the vector sum of all the forces acting on the particle. Second example is instantaneous power. So power is nothing but the rate of change of work. So F dot S pokedela hame jodi work ro value, then it will give you finally F dot ds by dt, which is F dot v, jota ki velocity सहित dot product होची force. Then flux of a vector, flux केमती बाहर करिबा हमें, suppose हमें गोटे vector नेला v. Okay, v गोटे vector which is inclined at angle theta. Okay, it is inclined at an angle theta with the outward unit normal A. Then flux of this vector is nothing but the normal component vector into the area. Okay, normal component into area. Normal component हेगला v cos theta और area suppose हेला एठी A, ताले v dot A. Okay, on the same procedure we can have electric flux equal to E dot A and magnetic flux equal to B dot A. Next example is angular momentum. Angular momentum कहले हमें बुझिबा, it is the cross product of your radius vector or position vector and the linear momentum. Linear momentum हेले mass into velocity. So angular momentum हेगला r cross p, right? Then torque বা ইয়াকো আমি কই পারিবা moment of a force about a point is given by tau equal to r cross f. r हेगला again position vector. Okay, a force हेगला तमरो एठी f. angular velocity पुणी आसुची. angular velocity गोटे rigid body रो जदि आमे नै जबा about some axis, fixed axis, then rotate जदि करूची about an axis, suppose axis of rotation हेला on. angular velocity of its rotation suppose हेगला omega, r हेगला position vector, then we have the linear velocity v equal to omega cross r, right? So this is all about your scalar product and vector product. Thank you.